ये तो ऐसे होता This I have to accept. है। मॉर्निंग मैम मैम। बोलती है कि हर चीज एक्सेप्ट किया करो. Good morning, ma'am. Good Good morning. Good morning, Good morning, Deepti. ma'am. Morning, ma'am. Good morning, all. Good I morning, just want to ma'am. check that किसने क्या सुंदर से लिखा. Good morning, beta Deepti. चेक करवाओ No, सरिता I just मैम हो heard गया। now Yes. who was that? I was so I was in the kitchen, but I could hear. Yeah, I'll show you. सरिता जी। Wait. You have written, Sarita ji. Yes, 333 times. Oh my God, that's amazing. So what is it that you wrote? If Thank it's you, not thank the you, per- thank you, thank you, thank you. Arey vah, amazing. Yes. So there are so And- many people who've got miracles happening by writing just And- 100 times, you know. And Thank you. 100 times, ma'am, ye one liners. I love. I have also Thank you written. to the drivers, शलवीना यही करती है खलासीs. मैम। हाँ शलवीना जो है वो हाँ यही करती है, मतलब समझ में नहीं आता तो खाली थैंक यू थैंक यू तो थैंक यू थैंक यू लिखती है 100 सेंड टाइम्स. दोस थैंक यूज आल्सो। नहीं समझ में आया, वो भी लिखी हूँ 101 नहीं, every day I will write. नहीं Yes. आपको तो खैर हाँ आता है मैम। मैं हाँ. अपनी फ्रेंड की बात कर रही थी। Yes, okay. हाँ. This is Ma'am, amazing. I have Sarita. also written, ma'am, in हाँ. with different color pens. अरे वाह. अरे, this is so. Let me just pin it in. I अरे have वाह. written, मैंने इसको थोड़ा सा कलर कर दिया कि बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी विद थैंक यू जो आपने कल बोले थे, थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स जो पूरी घर के Yes. पूरे साल भर में यूज किए हैं या जो देखिए. चीजें बस नजर आती जा रही थी, दिखती जा रही थी, बस घर में नजर घुमाती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, एंड लाइक बहुत सारी अनलिमिटेड हो गई। है ना. और इसकी वजह से कितना अच्छा द फीलिंग जोन इज सो गुड, you know, like that's another benefit of it. I'm sleeping Yeah. so well. I've never slept so well ever. Like बिल्कुल बेड पे जाते ही मुझे नींद आ जाती है, and I'm so restful when I wake up in the morning. You know, these thank yous are kind of penetrating each and every cell of our body. Yes. So this is really incredible. 100 तो I thought कि मैं लिखूंगी every day, even to the tailors, kumar, blacksmith, miners, mines, goldsmith, cobblers, printers, publishers, सबको thank you universe to the Yeah. Navy, Air Force, Army. Yeah, we are so well rested because of them. We know someone's Yes. taking care at the borders. Yes, CRP police, military, traffic Yeah. police, very Yeah. आते गया लिखने लगे. And Wow. today also 100 different ones. I love making records. So Sarita ji, आप तो इतने सालों से कर रहे हो ये practice, but इतना deeply अभी लिखना is something Yes, that is yes. Just incredible. after listening to you carefully, diligently, That's and without missing a day. हाँ, मैं रोज without सोचती missing a थी कि day. आज सो जाती हूँ, आज नहीं उठूंगी, फिर वो लगता है नहीं 5:30 गेट अप. क्लॉक ही ऐसा सेट हो गया है, बायोलॉजिकल क्लॉक, Yes. मन ही दीप्ति नहीं मैम करता। कहते हैं ना अपना 100% देना है, तो हम 100% 100. Yes. Actually, आप लोग तो 200% दे रहे हैं actually. Oh, But this will bring so many victories to every life. I'm telling you that, you know, you will unveil so many such vistas and zones in your life that you've never seen before. This is how, because ये एनर्जी तो वापस आएगी ना. आप तो बस भेजने का काम कर रहे हो. ये वाली एनर्जी ये वापस तो आएगी ना आपकी लाइफ में, और वो बहुत सुंदर फॉर्म में आती है. सो इनक्रेडिबल. और जैसे आज का चैप्टर है डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम, आई थिंक हम ये एक और चैप्टर है मैजिकल फुटस्टेप्स के बाद, विच वी यूज अ लॉट in everything that we do. Even if you are making a kheer in the house, we would do this. If we're going for a business meeting, shopping, we do magnificent. I do this a lot when I go shopping, because टाइम इतना स्पेंड अब हमको करना की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यू कैन जस्ट पुट इन एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड बिफोर यू गो टू डू एनीथिंग, एंड देन दैट्स हाउ इट अनफोल्ड्स. सो दैट्स मैग्निफिसेंट आउटकम. किसी भी आउटकम, कोई भी छोटे बड़े काम जो भी होते हैं उनके लिए. और ये मैग्निफिसेंट आउटकम की इमेज है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं कुछ करने के लिए. अब दिन भर में बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें सबसे पहले अभी तो सेशन है, तो अभी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो उस स्टडी के लिए एंटर करने के पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो, दैट आई विल बी एबल टू डिराइव एग्जैक्टली व्हाट आई नीड फॉर माय लाइफ through the study of magic and the hero.
okay, or for the wonderful study. फिर उसके बाद मेरा तो gym होगा. So I will say that thank you, universe, for the amazing exercise time and strength training that I had today at the gym. मजा आ गया करके. It was so much fun, while it was so effective on my body as well. फिर उसके बाद जो भी करना है next, तैयार होना है. Thank you, universe, that today I was looking so good. It is so amazing. Thank you. सो देन उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट वो है, तो इस तरह कर कर करके पूरे दिन किसी भी चीज को आप करने जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, अपनी मदर इन लॉ के घर जा रहे हो, अपने पेरेंट्स को बाहर लेके जा रहे हो घुमाने के लिए, हर इवेंट के पहले मैग्निफिसेंट आउटकम पहले से ही थैंक यू बोल दो, तो वो वैसे ही होता है एग्जैक्टली जैसे सोचा था. इनफैक्ट इट इज ऑलवेज x+5. इट इज नॉट ऑल यू आस्क फॉर x, you say thank you for x, but it unfolds like x+5. You ask for little, but you get much more. And slowly you get into that habit of deciding the outcome even before it happens, और फिर ये हमारी आदत बन जाती है. So that is what it was, because gratitude की energy पहले से ही डालना बहुत important होता है. So हम study करते हैं. Meetu from Calcutta. Good Please morning, join everyone. us. Good morning. Day 21, Magnificent Outcomes. Quote, you say grace before meals, all right, but I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. Unquote. G.K. Chesterton, writer. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life does not happen by chance or because of a stroke of luck. The law of the universe operates mathematically to the finest possible degree that is something you can count on. A pilot does not hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the law of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs the outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for the magnificent outcome is one of the simplest ways to do it. The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcomes to the work meeting, job interview, game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year.
If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusion and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. If you miss your bus or train on your way to work or miss a flight or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what is wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction. You will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. When you're grateful for the magnificent outcomes, you're using the universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time, and no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your lives currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you. Because when the magic happens to those humdrum activities, you will be certainly convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or the post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. Make a written list of the three situations you have chosen for the magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome 2 dash. For the second step of this magical practice,
You are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for the magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 mails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about practicing gratitude for the magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcomes to dash. You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life. As a matter of course, but practicing it today will get you into idea of it, and in the future, if you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Magic practice number 21, magnificent outcomes. Point number 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, at the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Point number 3, list your 3 things and write each one as though you're writing it after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. Point number 4, as you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for the magnificent outcomes. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Just before point number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू मीतू। आज Thank आपकी you. ट्रेन भाग रही थी but you were so fast, I was constantly like वो स्क्रीन पे लाने के लिए didn't get a moment's time also. Oh, Thank you so much. Thank you. Thank you for reading. It's always a pleasure. In fact, I've been thinking about you. मैंने कहा मीतू बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनाई दिया। Everything thank is you. okay? Yeah, all good, all good. Yeah. So this beautiful chapter, magnificent outcome. So इसमें कभी भी अब हमारे लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसमें डाउट और अनसर्टेनिटी है। that I really hope हम बहुत अच्छे से वो कर लें। I hope मुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए। I really wish कि इस तरह से हो जाए। We don't need to say that because we can decide the outcome. So it says by the law of attraction, अगर आपके मन में वरी है, डाउट है किसी भी काम को लेके, मतलब anything, be it the smallest of a thing that you're doing, even if you're doing the safari of the house, suppose you decide that I'm going to clean up the house today along with your staff in the house, तो उसमें भी magnificent outcome करते हैं, that thank you for the magnificent outcome to a great and joyful cleaning day. So, and it's done. And you will see that somehow it will become a day full of fun, love and laughter. मतलब हंसते हंसते पूरा काम हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा? बिकॉज आपने पहले ही उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपने पहले ग्रेटिट्यूड की एनर्जी डाल दी थी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क पूरे टाइम करती है। इट्स नॉट दैट इवन राइट नाउ अगर कोई वरी थॉट्स आ रहे हैं, सपोज बच्चे के स्कूल से फोन आता है कि आपको मतलब पेरेंट्स को आने की जरूरत है एंड इट्स अ वीक डे, सो ऑब्वियसली वरी थॉट्स आएंगे ना ऐसे में। आई मीन एकदम से सोचेंगे कि ऐसे तो कभी पहले बुलाया नहीं, आज मुझको स्कूल क्यों बुलाया है, क्या हो गया ऐसा, आई होप एवरीथिंग इज ओके। सो फ्रैंटिकली सबसे पहले मतलब कॉल पे यही वाला वो होगा सेंटेंस कि वो तो ठीक है ना, माय चाइल्ड इज ओके राइट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क। Okay, so by the law of attraction, worried thoughts are going to invite more worries in the day. So this moment, if we are worried, the next moment definitely is worried. मतलब रॉन्डा बर्न ने तो इतने अच्छे से पावर बुक में बताया है कि वो जब सुबह जब तैयार होके अपने काम पे जाती हैं, सो वो जब नहा के जो कपड़े पहनते हैं हम लोग मतलब आज के पूरे दिन भर के लिए,
वो उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे वरी में नहीं रहना है, मतलब मुझे उसमें नहीं रहना है, कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन होती है ना कई बार, मैं ये पहनूं कि ये पहनूं, ये अच्छा लगेगा कि वो अच्छा लगेगा। कई बार हम एक कपड़ा निकालते हैं, फिर उसको वापस रख देते हैं, फिर दूसरा वाला कपड़ा निकालते हैं कि नहीं ये वाला पहन लेते हैं, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो वो कहती हैं कि मैं इतना भी, मतलब मैं पावर ऑफ नाउ में इतनी स्ट्रांगली रहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतना भी स्कोप नहीं करती कि मैं कंफ्यूज हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं कपड़ों को भी लेके अभी कंफ्यूज होंगी तो नेक्स्ट मोमेंट मेरा और कंफ्यूजन वाला होने वाला है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इस मोमेंट में आप जो हो, आप वो इमिजिएटली उसके लिए पाथ पेव कर देते हो, वो रास्ता बन जाता है कंफ्यूज्ड चीजों के लिए। सो वो पूरे दिन कंफ्यूजन ही रहेगी फिर मुझे। तो कहती है मैं इसलिए वो भी नहीं करती, उसके पहले भी मैं मैग्निफिसेंट आउटकम कर लेती हूँ, इवन बिफोर डिसाइडिंग व्हाट क्लोथ्स आई एम गोइंग टू वेयर फॉर टुडे। सो दिस इज हाउ इट इज, बिकॉज मोमेंट में रह के कॉन्स्टेंटली अगर अगर डाउट वाले थॉट्स आ रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट आउटकम, हमारी बहुत सारी फिर ऐसी चीजें होंगी जो डाउट्स वाली ही होंगी। सो इसीलिए पहले से ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अभी हम अच्छा सा सीड प्लान कर देते हैं उस चीज को लेके जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, है ना। जैसे नॉर्मली होता है कहीं जाना होता है, सो कहते हैं कि नहीं उस वाले एरिया में बहुत ट्रैफिक होता है। सपोज आपको चांदनी चौक काइंड ऑफ अ प्लेस जाना है शॉपिंग करने, और जाना ही है बिकॉज देयर आर सम थिंग्स यू गेट ओनली एट चांदनी चौक, which is definitely a great market to go to. So people who don't know, Chandni Chowk is like a very crowded area of Delhi. So it is known to be for being crowded. अब अगर हमें जाना है तो हम पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द फन, इजी, जॉयफुल एंड सच अ प्रोडक्टिव ट्रिप टू चांदनी चौक टुडे, है ना। एंड नाउ वी विल हैव दैट। आई मीन बिकॉज वो पर्टिकुलर चीज जो थी उसको लेके थोड़ा सा डाउट आ रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग में आ रहा था कि इट इज सो क्राउडेड, इट्स फुल ऑफ पीपल, हाउ वी गोइंग टू गो एंड कम बैक, और इस तरह रश है, सेफ भी नहीं है, लोग बहुत डरते हैं वहां पे वॉलेट्स और वो सेल फोन्स ले जाके, बिकॉज वो पता नहीं, आई मीन लाइक व्हाटएवर। सो पहले से ही आपने ऐसा कर दिया, मैग्निफिसेंट आउटकम टू अ ग्रेट शॉपिंग टाइम एट चांदनी चौक, और सच एन easy, fun, joyful and productive shopping time at Chandni Chowk today. So now it is done because universe को आपने पहले से थैंक यू बोल दिया, and now you will have it done exactly like that. So अब वो वाली चीज नहीं है कि ओ गॉड इतनी भीड़ है, वहां से आके बहुत थक जाते हैं, नहीं इतना टाइम लग जाता है, वहां पे बहुत ढूंढना पड़ता है चीजों को, स्टोर्स को। अब वो सब तो होगा नहीं, क्योंकि आपने पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आपने जो एनर्जी दी थी अपने लाइफ से towards that shopping time, that's already taken, and it will be multiplied and it will be given back to you exactly the way you had envisaged. So this is how beautiful the things are. So इसीलिए अब जितने भी doubts और वो वाली जो चीजें होती हैं उनको faith and certainty में convert करना, है ना। और कोई वरीड थॉट्स, किसी भी चीज को लेके अगर वरीड थॉट्स आ रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हो, बैंक लोन सपोज आपने अप्लाई किया है फॉर एनीथिंग, मे बी वांट टू परचेज अ हाउस, और आपने बैंक लोन अप्लाई किया हुआ है बट वो थोड़ा सा ड्रैग हो रहा था पीछे, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में पास्ट एक्सपीरियंस का ड्रैगिंग वाला जो वो था एनर्जी, वो है उस पर्टिकुलर चीज के लिए और बैंक जाने के लिए। सो इंस्टेड यू कैन जस्ट गो एंड पहले से ही मैग्निफिसेंट that thank you for the magnificent outcome to a very productive visit to the bank, and productive and conclusive visit to the bank. तो अब वो हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि आपने पहले से ही उसको थैंक यू बोल दिया। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अब आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आपके मन में चल रहा है। इसीलिए डोमिनेंट थॉट्स ऑलवेज बिकम थिंग्स। सो डोमिनेंट थॉट्स को ही तो हमको चेंज करना है ना। अब हम नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहते, क्यों रहें? We don't want to see that, and every thought is creating your next moment. So that is something we need to remember and keep in mind all the time, and decide the outcome for everything, especially the things where you are not very sure. Like suppose if you all are school teachers and there is some event that is happening and you are responsible for it. जैसे कोई भी इवेंट होता है तो कुछ टीचर्स होते हैं जो केटरिंग का देखते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों को ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो अशरिंग में होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो बैक स्टेज काम कर रहे होते हैं। सो इस तरह से बहुत सारे मतलब असाइन वर्क होते हैं। तो पहले से ही कर दो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द ग्रेट इवेंट दैट पीपल लाइक द मोस्ट फैबुलस इवेंट वी एवर हैड इन द स्कूल, एंड इट इज डन. So the moment you've said thank you, by the law of attraction, it is done. Because parallel universe में thank you की एनर्जी आ गई है। अब वो काम वैसे ही होके रहेगा जैसे आपने सोचा था, rather I would say कि वो उससे भी बेहतर होगा।
ठीक है। सो इस तरह इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि आप अपने जॉब इंटरव्यू के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो, आप किसी भी चीज के लिए, इवन इफ यू आर मेकिंग सम डिश इन द हाउस, कोई रेसिपी आप ट्राई कर रहे हो, केक बेक कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, आप पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम उसके लिए कर दो। तो अब वो है ही नहीं कि बिकॉज कई बार ये लगता है कि आई रियली विश दैट ये काम ऐसे हो जाए, आई रियली विश कि आज हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रहे, जैसे एकदम से बॉस ने बुला लिया, दैट इज अ मीटिंग एट वर्क, सो एकदम से वो बटरफ्लाईज हो जाती हैं स्टमक में कि क्यों बुलाया इसे मुझे, सिर्फ मुझे ही क्यों बुलाया है। सो आपको पता भी नहीं है कि क्यों बुलाया है। जैसे वो बच्चे के स्कूल में बुलाते हैं तो फिर वो पता नहीं होता क्या बुलाया है, बट हो सकता है कि आपके बच्चे का बहुत मतलब कोई सिग्निफिकेंट इवेंट है, उसमें आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो सकता है कि लाइक किसी स्पोर्ट्स मीट में उसको चूज किया गया हो। सो इट कुड बी एनीथिंग, नो, ऑल गुड थिंग्स। सो इंस्टेड हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ जाता है, और नेगेटिव चीज की तरफ तो एक तरफ तो जाता ही है, बट बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वक्त जितनी भी चीजें होंगी उसके नेक्स्ट मोमेंट पे वो सारी नेगेटिव होंगी। व्हाई? बिकॉज हमारे दिमाग से एनर्जी वही वाली रेडिएट हो रही है। So we don't want to continue like that during the day, no? We want to be happy, we want to be joyful, and etc., all of that. So that is what magnificent outcome is all about. और इसमें बहुत अच्छे से जो आज की प्रैक्टिस के हिसाब से इसमें ये बताया हुआ है दैट हमको एक्सपेक्टेड इवेंट्स तो 3 चूज करने ही है, रिटन लिस्ट बनानी है आज लिखने की प्रैक्टिस है, ठीक है, बोलने वाली नहीं है। सो जैसे हमको असाइनमेंट में दिया हुआ होता है हम वैसे ही करेंगे। सो इसीलिए एट द बिगनिंग ऑफ द डे, मतलब सुबह सुबह करना है, ऑब्वियसली सुबह ही करेंगे ना, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट 9 बजे ही हो, सुबह 9 AM पे। सो वी हैव टू चूज 3 थिंग्स, या ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत अच्छा आउटकम चाहिए उसके लिए, जहाँ पे यू रियली वांट दैट आज ये सब बहुत अच्छे से हो जाए, और उन तीनों चीजों की आप लिस्ट बनाओ, और ऐसे लिखना है एज इफ वो ऑलरेडी हो चुकी है, एग्जैक्टली उस तरीके से जैसे आप चाहते थे, like thank you for the magnificent outcome to so and so and so, whatever the thing was. Thank you, like for an example, thank you for the magnificent outcome to a great workout at the gym today, which I thoroughly enjoyed and felt so good. Okay, thank you for the magnificent outcome to a great drive to my friend's place, which was so joyful, easy, and fun. Thank you for the magnificent outcome to an amazing lunchtime with my friends where we laughed so much. Thank you for the magnificent outcome to such an easy and conclusive shopping time I had today. So whatever it is, for that you have to say thank you. तो हमको 3 आज के दिन में कोई ऐसी चीजें चूज करनी है. It just could be cooking whatever, अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो, छोले बना रहे हो, suppose you're making some छोला करी, उसके लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वो इतने टेस्टी बनेंगे, और उसमें एनर्जी जो ग्रेटिट्यूड की होगी उसके कारण देयर विल बी अ पेप इन द टेस्ट ऑफ दैट डिश और दैट रेसिपी दैट यू आर मेकिंग। सो दैट इज हाउ इट इज डन। सो 3 ऐसी चीजें चूज करनी है जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम चाहते हो, और उसको लिखना है आज, ठीक है। और लिखने की लैंग्वेज विल बी दिस, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस। और फिर उसके बाद जैसे दिन होता जाएगा, चलते जाएंगे, तो वैसे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी तो होती हैं। किसी का फोन आ गया, या किसी ने मैसेज ड्रॉप किया हुआ है दैट प्लीज कॉल मी बैक, या किसी ने व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ काम आपको दिया है, या जो भी चीज है फॉर दैट मैटर, अनएक्सपेक्टेड एकदम से जो हो जाती है, तो उनके लिए आपको मन में करना है, उनके लिए तो लिख के नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया है और कहा है दैट कैन यू प्लीज कॉल मी बैक, सो आप मैग्निफिसेंट आउटकम करके उसके बाद आप उनको फोन करना। सो इस तरीके से, और अनएक्सपेक्टेडली सपोज यू नीड टू गो आउट टू गेट सम ग्रोसरीज, ओके, एंड यू डिडंट नो दैट यू हैड टू गो, इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्लान, पहले से ही करके जाना, ठीक है। और ये बहुत जरूरी होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हो, ठीक है, हमेशा ऑनलाइन ऑर्डर्स करने के पहले, जैसे अगर आप कोई भी चीज स्विगी जोमेटो से मंगवा रहे हो, या आप अपने आउटफिट्स मंगवा रहे हो, कपड़े जो भी है अमेजोन से या आजियो से या मिंत्रा, नायका, I mean, like we see all these people a lot roaming around in the vicinity, isn't it? That means everyone's ordering everything, online, which is good, okay, ठीक है। बट फिर क्या होता है कि वो आउटफिट आपने ऑर्डर करी, अब आपको उसको रिटर्न करना है,
क्योंकि वो थोड़ी टाइट है, थोड़ी बड़ी हो गई है, आप पे अच्छी नहीं लग रही है, या वो बहुत लूज हो रही है, या वो वेस्ट से लूज है, या वो आर्मपिट से टाइट हो रही है। ठीक है, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए और इतना मैन पावर को अननेसेसरी वेस्ट कराने के लिए, मैन पावर भी तो है, किसी ने आपको ला के दिया है, फिर उसके बाद आप रिटर्न उसके लिए डालते हो, तो वो दोबारा से वो लेने के लिए वापस आता है, एंड पीपल से कि नहीं नहीं बहुत आराम से अमेजोन आ जाए उसे मंगवा लो, बहुत आराम से रिटर्न हो जाता है। बट कितनी मैन पावर जाती है, इजंट इट? आई मीन लाइक वो पर्सन है जो आपको देने आया था, जबकि एक सिंपल सा एक्ट हमको करना होता है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द परफेक्ट आउटफिट दैट आई ऑर्डर टुडे विच वाज बेटर देन व्हाट आई हैड इमेजिन्ड एंड बेटर देन व्हाट हाउ इट लुक्ड, and that is what we need to do. So this is called magnificent outcome, especially in online orders, because I see so many people कि नहीं ये वैसा नहीं निकला जैसे सोचा था, ये ड्रेस मुझ पे वैसी नहीं लग रही, या मेरी जो जीन्स है वो वेस्ट से बहुत टाइट हो रही है, उस स्वेटर का कलर उसमें तो अच्छा लग रहा था लेकिन जब वो डिलीवर हुआ तो वो ऐसा था, या मतलब इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए प्लीज ऑनलाइन शॉपिंग बिना मैग्निफिसेंट आउटकम के मत किया करो। ठीक है, सो वो सुबह ही कर लो। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है आज अपने बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी चीज, शूज और बैग्स और वट एवर इट इज, लिपस्टिक्स और whatever it is, shirts and jackets and pullovers or whatever it is. So please do your magnificent outcome practice very nicely and imagine that वो order आ गया है जो भी आपने मंगवाया था, suppose वो fleece jacket है, तो आप उसको पहन के it is looking so good and everybody is appreciating you and you know like इस तरह से उस extent तक आपको feel करना होता है gratitude, and by the law of attraction वो जो चीज आएगी it will be way better than what you had expected. Okay, so this is how we need to use this magnificence. So from today we are not doing any online orders, whether it is for food, whether it is for shoes, whether it is for clothing line, simple jewelry or whatever it is, we are not doing without applying the technique of magnificent outcome, and by the law of attraction you will attract the perfect dress for you, like this is how it will be. So और so 3 expected जो हमको अभी सुबह ही लिखने होंगे इस लैंग्वेज में, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस, एंड 3 अनएक्सपेक्टेड होंगे जो मन में करना है। सुबह वाले जो पूरे दिन भर के जो 3 हम चूज करेंगे वो हमको लिख के, और अनएक्सपेक्टेड जो चीजें एकदम से हो जाती हैं वो मन में करके। So this is the practice for today. Other than this, of course, morning में counting my blessings that we continuing to do. जो हम 10 blessings लिखते हैं उनको रीड करना है, और बहुत अच्छे से राइट हैंड को हार्ट पे रख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। ठीक है, और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस पूरे दिन भर को एक एक चीज को थैंक यू बोलना है, और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसको थैंक यू बोलना है। वी वांट टू बी कंफ्यूज्ड इन अ वेरी गुड वे, दैट कौन सी अच्छी थी, वो अच्छी थी कि ये वाली अच्छी थी, है ना, उस चीज में दिमाग लगा के थैंक यू बोलना है। अननेसेसरी चीजों में दिमाग नहीं लगाना है अब, है ना। वो सब कुछ चीजें सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, यूनिवर्स नोज वे बेटर देन अस, we don't have to tell anything, we don't have to tell how it will come to us, so whatever it is, and then enjoy your life. And other than that पूरे दिन अच्छे जोन में भी रहना है। अगर अच्छे जोन में नहीं रहते हैं तो मैग्निफिसेंट आउटकम, काउंट माई ब्लेसिंग्स, हैव अ मैजिकल डे कुछ भी वर्क नहीं करता। ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मुझे किसी ने मैसेज किया था नोएडा से, उन्होंने कहा था कि उनको मुझसे बात करनी है और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। उसके पहले भी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसे हो रहा है। तो उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स मैं तो घर ही कल 8:30 8:40 पे पहुंची हूँ। सो वो स्कोप नहीं होता मेरे पास, और मैं जनरली लोगों की प्रॉब्लम सुनना पसंद नहीं करती। ठीक है, वो मेरी जिंदगी में भी एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, ब्लेसिंग चली गई है, ठीक है, वो सब हो जाएगा, बिकॉज वो इतनी डिटेलिंग जो होती है सोप ऑपरास की तरह, आई डोंट लाइक टू लिसन। प्लीज बी अ फाइटर. I love each of you. I want you. The only reason why I'm here in the sessions is because आपकी life 360 degrees transform हो जाए। आप बस मुझको ये बोलो कि मुझे अपने रिश्ते बहुत अच्छे करने हैं, या मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं लोगों को दूं और मुझे पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़े। आई थिंक जिन्होंने मुझे मैसेज किया था उनको पैसे का इशू था।
ठीक है, और कभी किसी का रिलेशनशिप का पीछे इशू था, तो आपको ऐसे रिश्ते करने हैं कि लोग आपको, मतलब योर द बेसिस ऑफ योर लाइफ बिकम्स लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू गेट फ्रॉम एवरीवन, दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप इफ यू वांट। तो ये वाले प्रैक्टिसेस जो है ये 3 महीना अच्छे से करो। अगर प्रैक्टिस समझ में नहीं आती है तो आप चैट बॉक्स में डाल दो कि मुझे आज की प्रैक्टिस नहीं समझ आई। अगर आप YouTube पे मुझको सुन रहे हो तो आप उसमें डाल दो दैट मुझे इस प्रैक्टिस के बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो हम समझा देंगे आपको। ठीक है, वो हेल्प कर सकते हैं। एफर्मेशंस, इन चीजों के बारे में अगर फ्रीक्वेंसी लो होती है तो वर्क नहीं करेगी। एफर्मेशंस एक फर्टाइल ग्राउंड पहले ले करना पड़ता है, उसमें बीज बोते हैं तो वो फिर उगता है। ठीक है, अगर ग्राउंड ही फर्टाइल नहीं है, ठीक है, तो वो बीज कैसे ग्रो होगा? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नए हैं, अगर आप न्यू हैं, तो पहले 3 महीने शिद्दत से 28 प्रैक्टिसेस कीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रही हूं स्टैम्प पेपर पे लिखें कि आपकी जो इशू था, यू विल बिकम द पर्सन हु विल नाउ हेल्प अदर्स। ठीक है, अगर प्रैक्टिसेस 3 महीना नहीं की है, मतलब आपको 28 दिन में ही फर्क आ जाएगा बहुत ज्यादा। और इतने सारे मनी के चैप्टर्स तो किए हैं हमने मैजिकल मनी किया है, जिसमें हमने पूरे पास में बचपन से लेके अभी तक हमारे पास जहां से भी कोई भी चीज आई है जो पैसे से आती है, हमने उसको थैंक यू बोला है। बचपन में जो जूते पहने थे हमने, बचपन में जो रिटर्न गिफ्ट्स हमने दिए थे अपनी बर्थडे पे, जो गिफ्ट्स हमारे पास आए थे, जो हमारी नानियां दादी ने हमको पैसे दिए थे, ऐसे देते थे ना, कभी ऑरेंज बार खिला दी, ये कर दिया वो कर दिया, कभी कुछ, तो उन सब पैसों के लिए हम पहले थैंक यू बोलेंगे। पास्ट के लिए जाके अपने आप आपकी सिचुएशन आगे की चेंज होगी। ठीक है, तो वो मैजिकल मनी था, उसके बाद मनी मैग्नेट था। सो ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे जिन्होंने भी पिछले कुछ दिनों से इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बट मैं पर्सनल कंसल्टेंसीज नहीं कर पाती हूँ, स्कोप ही नहीं है ना। मतलब अभी मेरा मिल की तरह से, मिल में नहीं, वो मशीन चलनी शुरू होती है, मेरा वैसे दिन शुरू हो जाता है अभी। मुझे सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, एंड बहुत ही प्रोडक्टिवली आई यूज, मतलब मेरे पास सोशलाइजेशन का भी टाइम नहीं होता है। आई डोंट सोशलाइज एट ऑल, लाइक बहुत कम, कभी वंस इन अ मंथ या कभी ऐसे होता है। सो उस तरह की लाइफ में कोई स्कोप नहीं है कि मैं वो एनर्जी एब्सॉर्ब करूं। एंड मोर देन दैट, मतलब आई डोंट वॉन्ट यू टू अट्रैक्ट ऑल ऑफ दैट मोर। अगर आप मुझे इमोशंस के साथ अपनी कहानी सुना रहे हो, आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपने नरेट की है। डू यू वांट दैट? नो। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिजरीज एंड आई हैव दिस। सो इवन इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चंस इन दिस सेशन, इवन देन इट शुड बी कि मुझे बहुत रिच बनना है। बहुत अच्छी चीज है, सबको बहुत पैसा आना चाहिए। कल मैं सोनिका को भी यही बोल रही थी ऑन द वे बैक, सो आई वाज टेलिंग कि मैं चाहती हूँ कि लोगों के पास इतना पैसा भर भर के आ जाए कि उनको पैसे के बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़े, क्योंकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इतना पैसा है। You just have to pin that balloon, and that paisa will be yours. So it is like that. That's how life should be, and that is how life we have to make it to be. है ना? तो ये वाला, अब वो क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास ये है, मैं ये नहीं खरीद पाती, मेरे पास ये है, ये बात करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप ये बात करो कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या अगर आपके हेल्थ चैलेंज आ रहा है तो क्वेश्चन भी आप ऐसे पूछो, मुझे इतनी बढ़िया हेल्थ चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए कि मैं आराम से उठ बैठ पाऊं, मैं टाइम से सोऊं, टाइम से उठूं, हेल्थ मेरी बहुत अच्छी हो, एनर्जी मुझे बहुत चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई ना आपकी हेल्थ में ब्रेक डाउन है, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली अगर आपको ऐसे बोलना है दैट आई वांट अमेजिंग रिलेशनशिप विथ माय मदर इन लॉ, तो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड दैट अभी नहीं है ना ठीक ठाक सा, लेकिन आपको अमेजिंग रिलेशनशिप चाहिए अपनी मदर इन लॉ के साथ। तो बस हमारी सारी एनर्जी अमेजिंग रिलेशनशिप और फ्रेंडली एंड लविंग रिलेशनशिप विद मदर इन लॉ की तरफ डाइवर्टेड रहेगी। ठीक है, बार बार फ्रेंडली एंड लविंग रिलेशनशिप विद मदर इन लॉ। और अभी क्या है, बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ है। ठीक है, बट एनर्जी किस में जा रही है लगातार, कि आई वॉन्ट फ्रेंडली एंड लविंग रिलेशनशिप विद माई, और रिस्पेक्टफुल। सपोज रिस्पेक्ट नहीं है और आपको लगता है कि वो आपके साथ अच्छी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, सो वेरी फ्रेंडली, लविंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद माई मदर इन लॉ। तो पूरी एनर्जी, अब यही 3 वर्ड्स हम इन्हीं को च्यू करेंगे, ब्रू करेंगे, सोचेंगे। ठीक है, लविंग, फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल, लविंग, फ्रेंडली, रिस्पेक्टफुल एंड मदर इन लॉ। सो मदर इन लॉ के साथ हमने ये 3 शब्दों की एनर्जी को चिपका दिया है।
ठीक है, अब हमको सुनने की जरूरत ही नहीं है, मेरी सास ऐसा करती है, मेरी सास मुझे ऐसे बोल देती है, मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरा ये भी नहीं होता, मेरा वो भी नहीं होता, है ना। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बी दैट क्रिएटर, सिट ऑन दैट सीट, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट एनी मोर. Okay, we wasted enough of life already. So we don't want to waste the coming. We don't want to waste these moments and these days and these very, very precious life that we have currently. We don't want to waste these. So इसीलिए attach those keywords. मैंने यही आपको कल बताया था. कोई नजर आता है, because this I've been telling you ever since we started this session, that now you have to be the channel of blessings for the others. Because if you want your life to change very, very fast, you want to be that channel of blessings for the others. Okay, so in that case, health, wealth, happiness, मैंने आपको ये keywords बताए थे. कोई भी दिखता है आपको, चाहे आप जानते हो, चाहे आप नहीं जानते हो, चाहे वो बहुत अमीर है, वो बहुत गरीब नजर आ रहे हैं आपको, आपको कोई भी, वो रिक्शे वाले हैं, आपके घर में जो स्टाफ आता है वो है, आपको सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये 3 ब्लेसिंग्स उनके लाइफ में सैचुरेट करो और करते जाओ, जो नजर आ रहा है, जो भी है. ठीक है, हर एक इंसान, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो मेट्रो में अगर बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, तो सबको, कि सारे लोगों के पूरी गोल्डन डस्ट इमेजिनेशन में आप डालो ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस उन सब के ऊपर, कि वो जिस जिस काम के लिए जाते हैं उनका बहुत अच्छे से वो काम बहुत सुंदर तरीके से अनफोल्ड हो. बस ये करते जाओ. ठीक है, तो अपने कीवर्ड्स पे और अपनी मिजरीज पे ध्यान नहीं देके, चाहिए क्या. ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, डिवोर्स की कगार पे आ गया है, चाहिए क्या. लविंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, लविंग एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप, है ना. उन वर्ड्स को पकड़ लो. ठीक है, और जितनी भी बार दिमाग में आए उतनी बार, जैसे फिर से कुछ ऐसा हुआ, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया और वाइफ को लग रहा है कि मुझसे ऐसे ट्रीट करते हैं, तो वैसे थैंक यू फॉर द लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड. ठीक है, this is how you have to think. So your phrase, your catchphrase, your sentences will always be solution oriented. They will not be problem oriented. This is what I mean to say, and this is what I want to tell you. और practices, please, आप में से जितने भी वो 3 जने हैं जिनको मुझसे बात करनी थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, नहीं चलेगी. हम सब ने कभी ना कभी शुरुआत की थी, तो हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन्स थे, रिलेशनशिप्स में ब्रेकडाउन्स थे, बहुत, सब लोगों की अलग अलग कहानी होती है. सो सब ने ओवरकम किए ना, तो जब सबने किए तो आप क्यों नहीं करोगे. बिकॉज ये तो लॉ है. इट इज नॉट दैट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, ये मतलब ये इंसान तो बदल ही नहीं सकता. अगर सब बदल जाते हैं, जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है और आप ग्रैटिट्यूड एंड लव में रहते हो, वैसे ही पूरी दुनिया चेंज हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए अपने आप पे वर्क करो. जैसे डॉक्टर नकुल ने बोला था ना, तो उन्होंने सोचा है कि अब से वो अपने ऊपर फोकस करेंगे, टू डिस्कवर योरसेल्फ, व्हाट इज इट दैट आई वांट इन माय लाइफ. बिकॉज हम पूरे टाइम यही सोचते रहते हैं, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, वो ऐसे हैं उनको. We are not into that people pleasing, this, that. Work on yourself. Work on yourself. And you really need to work hard. We all need to work hard on ourselves. ठीक है, अपने आप असाइनमेंट्स करो. ये जितने भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, अगर इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आता है तो हम हिंदी में बोल देंगे, बट असाइनमेंट्स करो. और हम दोबारा वो समझा सकते हैं. जैसे अगर कभी भी हो तो कि ये असाइनमेंट आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं मे बी किसी और का नाम दे दूंगी, से मुस्कान का नाम दे दूंगी, कि आप मुस्कान को इस नंबर पे फोन कर लो, वो आपको आज वाला असाइनमेंट समझा देंगी. या कभी भी ऐसे कोई, या मैं अनुराधा का दे दूंगी. अगर वीकेंड नहीं होगा तो वीकेंड पे तो वो भी बिजी होंगे, जब वीकेंड नहीं होगा तो मैं बता दूंगी कि आप अनु से पूछ लो, वो आपको समझा देंगी कि आज का असाइनमेंट कैसे करना है. उन चीजों में आप हमारी हेल्प ले सकते हो. ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आती है. अगर असाइनमेंट्स के बारे में पूछना है तो आप सुबह सेशन में टाइप करके पूछ लो. अगर नहीं बोल सकते, या किचन में हो, या लोग हैं आसपास आपके और खुल के नहीं बात कर सकते, तो आप सेशन में कर सकते हो दैट ये कैसे करना है. बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं काम चलेगा. ठीक है, चीजें मूव नहीं करेंगी. तो 3 महीने शिद्दत से करो. उसके बाद आप खुद देखना, बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे चेंजेस होने लग जाएंगे और आपको लगेगा कि ये इंसान ऐसे इतना बदल गया. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर ऑल 3 ऑफ यू हु वांटेड टू टॉक टू मी. सो ऑलवेज बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. चाहिए क्या, प्रॉब्लम नहीं सुननी मुझे.
ठीक है, क्या चाहिए, बहुत अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए, आपको 1 लाख रुपए जॉब ढूंढनी है, इतनी अच्छी जॉब चाहिए मुझे, ये इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछो तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर मिजरीज मुझे बताने लग गए तो सारी वो आपके पास वापस आ जाएंगी, है ना, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। द पावर ऑफ वर्ड्स पे किताबें किताबें पुराण लिखे गए हैं, यू नो, द पावर ऑफ वर्ड्स पे। क्या हम अपने वर्ड्स को अब नेगेटिवली यूज करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे ना। हमको ये पता लग गया है कि अब पावर ऑफ वर्ड्स क्या होती है। अगर आपने ये बोल दिया, इट इज डन इन द पैरेलल यूनिवर्स, यू नो, मैं मोटी होती जा रही हूँ, सपोज एज एन एग्जाम्पल, इट इज डन, खत्म, मैं मोटी होती जा रही हूँ, अब वेट करो, देखो कि आपके कैसे इंचेस बढ़ना शुरू होंगे। तो पावर ऑफ वर्ड्स को हमको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ता है ना। हम नहीं, मैं तो कल आपसे कंटेंट कंजम्पशन के लिए बोल रही थी कि कोई भी ऐसी पिक्चर, कोई भी ऐसा टीवी सीरियल, कोई भी ऐसी वेब सीरीज अगर आप देखते हो जिसके बाद आपको स्ट्रेसफुल लगता है, आपके सेल्स वो एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं लगातार वो स्ट्रेस को। वो यू नो मर्डर मिस्ट्री देख रहे हो सपोज, या कोई ऐसी देख रहे हो जहां पे बहुत फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या जहां पे बहुत मर्डर्स हो रहे हैं, आपकी जिंदगी पीसफुल एंड हैप्पी हो ही नहीं पाएगी। ऐसे ऐसे कंटेंट को आप कंज्यूम करते हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, नहीं, मूवीज में सब में हम बहुत इमोशनल, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है पिक्चर देख देख के, यू नो, व्हेन दे रिलेट टू दैट पर्टिकुलर सीन दैट दे सीइंग ऑन द स्क्रीन। सो ऐसे जब जब हीरो विलेन को मार देता है तो लोग खड़े होकर सीटी भी बजाते हैं, ठीक है, ताली बजाते हैं, मूवी में बहुत तालियां बजती हैं, ठीक है। सो इस तरह से इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत होती है जब हम ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो भी डिजिटल मीडिया से कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इवन इफ इट इज फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई दुखी वाली कई बार ऐसी फोटो लगा देते हैं, आई मीन यू जस्ट डोंट हैव टू, आई मीन डोंट, जस्ट पास इट ऑफ, ओके। सो ये तो हमको करना पड़ेगा ना। तो मैं उसके लिए आपको बोल रही थी, तो आपको अपनी जिंदगी का दुख भरा बखान आप मेरे साथ करोगे, मैं तो करनी नहीं दूंगी, बिकॉज आई लव यू सो मच। मैं तो करने नहीं, मैं नहीं चाहती कि आपकी जिंदगी वैसी हो। हाँ, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अपना रिश्ता बहुत अच्छा करना है, मुझे मुझे बहुत अच्छी जॉब चाहिए जो मेरे घर के पास हो, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं ज्यादा, मुझे 6 घंटे में बहुत सारा कमाना है, ये सब हम आपके लिए करा देंगे। ये आपकी ड्रीम लिस्ट में आ जाएगा कि कम टाइम करके ज्यादा पैसे कमाना, ये करना है। प्लीज बोलो, यूनिवर्स को तो ये सब बहुत पसंद है, यूनिवर्स को चैलेंजेस बहुत पसंद है, 6 घंटे में ढेर सारा पैसा कमाना, और आप प्रोडक्टिव हो जाओ, मतलब जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स है वो आप लिखो उसमें। डिजायर लिस्ट पे तो अभी हम काम कर रहे हैं, जो 13 चैप्टर से अभी 22 पे फिर से आएगा। तो इस तरह से, ठीक है। तो अभी बस जैसे बता रहे हैं, अभी वैसी असाइनमेंट करो, ये टाइम है जब आप अपना फर्टाइल ग्राउंड लेकर रहे हो, करते जाओ अभी, एंड धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ, एंड यू विल सी दैट इट विल अनफोल्ड इन द मोस्ट मैजिकल वे। Okay, so we are starting a new segment of the book Hero, which is called part 3, The Quest. So yeah, we can start reading. So today Poonam from Chennai is reading. It's your first time with us. Are you there on the call? Hello, ma'am. Yeah, you're there on the call. Yeah. So Morning, this is ma'am. first Morning, time everyone. reading with us, right? Yes, ma'am. Please wish me luck, everyone. So sweet. Please wish me luck. The luck. You have all the luck of the world, babe. Thank you, ma'am. Thank you. Part 3, The Quest. The Labyrinth. ओके, सो लैबिरिंथ का मतलब होता है, क्वेस्ट का मतलब होता है जिज्ञासा, है ना। लैबिरिंथ का मतलब होता है जैसे हम पहले भूल भुलैया खेलते थे ना, या अभी भी कहीं पे किसी पार्क्स में वो भूल भुलैया होता है बीच बीच में कि रास्ता ही नहीं मिलता, ठीक है, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, लैबिरिंथ। ऐसे नेटवर्क ऑफ पाथवेज जिसमें एंड में रास्ता हमको मतलब वो ही नहीं मिलता, दैट्स कॉल्ड लैबिरिंथ। सो आई डोंट नो हाउ इट इज कनेक्टेड टू दिस। हाँ जी। Laird Hamilton. The journey itself will never be as you think. You have an idea of the destination, but you never know the route. Many people give up on their dreams or don't even begin to pursue them because from where they are standing, they can't see the whole path to their dream. You will never see the whole path ahead, and so you will never know how your dream is going to come true.
No successful person has ever known how his or her dream would happen. They simply believed that it would happen and did not give up until it had. So now we know why the meaning labyrinth, or why that word labyrinth was here. So Laird Hamilton, who was a surfer, he says that जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार पता नहीं होता कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हो जाता है. ठीक है, एज लॉन्ग एज आपको डेस्टिनेशन पता है, आपको ये पता है आपको जाना कहाँ है, अपने आप रास्ते बनते हैं. एंड वो रास्ते, इसीलिए हम बोलते हैं ना, हाउ में नहीं जाते. इन्होंने लिखा ही है ना लेड हैमिल्टन में, दैट वी डोंट नो हाउ इट विल हैपन. किसी सक्सेसफुल पर्सन को आज तक ये नहीं पता है दैट हाउ इट हैज अनफोल्डेड, बट हो जाता है अपने आप से. डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए बस. दैट इज वॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. So that's about it. So it says here, no successful person has ever known how his or her dream would happen. इसीलिए फोकस आपका डेस्टिनेशन में होना चाहिए एंड इंजॉय द जर्नी. इंजॉय करो. वो पिटफॉल्स आ रहे हैं, वो कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी कुछ ऐसी चीज आ रही है जो आपको नहीं चाहिए. दिस इज अबाउट द जर्नी. क्योंकि आपको अपना गोल पता है कि मुझे सो एंड सो के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ड्रीम लाइक करनी है. अमेजिंग रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. ठीक है, ये आपका सपोज ये वाला ही ड्रीम है. अगर आपको वो डेस्टिनेशन भी पता है, अब आप बस अपने ऊपर काम करो और stay put on that goal, that this is where I want to reach, or how universe will decide. And this is what he says here. ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कभी कुछ ऐसा होगा कि आप खुद हैरान रह जाओगे कि ये कैसा आया, इस तरह का वर्क प्रोफाइल मेरे लिए कैसा आया, मेरा इतना अप्रेजल कैसे हो गया, डबल सैलरी हो गई. आपने तो नहीं सोचा था, किसी ने सोचा था कभी? आपने बस ये कहा था कि मुझे हर महीने इतने पैसे कंफर्टेबली रिसीव करने हैं विद ईज एंड जॉय. बस आपने इतना ही बोला था, है ना? आपकी ड्रीम लिस्ट में इतना ही था, that I want to receive, suppose 2.5 lakh rupees. कि I am, thank you universe that I'm receiving rupees 2.5 lakh every month with ease and joy. ठीक है, अब वो कहाँ से आना है, इसको यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, छोड़ दो. अपने आप आपके सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होंगे, या तो कोई पैरेलल बिजनेस शुरू हो जाएगा, या आपको पता लगेगा. मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में आपको बताया था, that she, Preeti Bharadwaj, who's also the founder of our group actually. वो उनको she needed a huge amount of money for something, like उस वक्त उनको था, and in lakhs, and she didn't know from where to get. And of course her husband could have given to her. She didn't want to ask her husband. She was very, very clear. She said already he's running the family, and then my mom also lives with us, and all of that. I don't want to ask Rahul for it. So वो नहीं राहुल से लेना चाहती थी पैसे, और उनको बहुत जरूरी चाहिए थे. तो उन्होंने she just wrote it in the dream list. And it so happened that उनके कोई, so प्रीति के डैड की, so Preeti is my Dirani, that way sister-in-law, not the nun sister-in-law. So then Preeti's dad had recently passed away, और जो उनके कोई दूर के चाचा थे, उनका जलंधर से फोन आया प्रीति के पास में. So Preeti is a Sadharni, married into our family, वर्मा खानदान. So उनके जलंधर से उनके वो दूर के चाचा का कोई फोन आया. उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमारा बहुत सारे खेत थे, फार्मलैंड थे, जिसपे वो फसल हो रही थी, वो सब कर रहे थे जो वहां पे रहते उनके दूर के चाचा. तो उन्होंने कहा that we've just sold off that zameen and your father's share, we don't know whom to give it to. So since you are the daughter here, and we have only your number, so please give your account number. We want to transfer all that amount to you, your father's share, because your father's share is also here, with us. And within a week, she got lakhs of rupees. that वो जमीन जो बिकी थी गांव में, उसको पता भी नहीं था, वो उनको जानती भी नहीं थी, वो जो दूर के चाचा थे उसके. वो कहती कि उन्होंने बताया कि मैं आपके फादर का भाई हूँ और बहुत दूर के रिश्ता है, लेकिन हम सब की एक जमीन थी जो बहुत सालों पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने कभी ली थी, तो उसमें आपके पापा का भी हिस्सा था. कैन यू बिलीव इट? सो अगर दिमाग लगाते उस टाइम, तो उसको तो पता ही नहीं लगता ना कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था. सो
that is how it unfolded, and she got that money and she was so thrilled. और उसने हमारे सेशन में स्पेशली आके बताया था, बिकॉज शुरू में तो हम 4 ही जने थे ना. So I was taking the sessions, and with me were only Deepak Verma, Sunita and Preeti. We were just 4 people. तो हमने जूम पे हम यही 4 जने होते थे, और हमने काफी महीने, मतलब ऑलमोस्ट नॉट काफी महीने, आई थिंक 1 महीना हम सिर्फ 4 ही जने थे. हमने सेशंस लिए थे. 2020 मई की बात है. उसके पहले तक तो मैं खुद ही समझ रही थी, वो कर रही थी and all of that. So I had already changed my life by 2020, because I was doing all the assignments since, for the last 1 year, very, very diligently. So I had already changed my life to a huge extent by 2020 May. And that is how it unfolded. तो उनको क्या प्रीति को कभी पता लग सकता था उसके पास इतने लाखों रुपए कैसे आ जाएंगे आउट ऑफ द ब्लू? उसको कुछ नहीं पता था कि कोई ऐसे चाचा जी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में. कोई उसके पापा का बहुत बड़ा शेयर है किसी जमीन में, और वो जमीन बिक गई है, और पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया. हाउ में जाऊं मत, उसने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख दिया था कि मुझे इतने लाखों रुपए की जरूरत है, और वो राहुल से लेना नहीं चाहती थी. वैसे राहुल इतने अच्छे इंसान है कि वो बोलती तो वो उनको जरूर दे देते, बट उनको ये था कि नहीं, राहुल ऑलरेडी बहुत करते हैं. मेरी मम्मी भी मेरे साथ, क्योंकि अंकल की डेथ हुई थी तो प्रीति की मम्मा उन्हीं के पास मूव इन कर गई थी, क्योंकि अंकल आंटी अकेले गुड़गांव में रहते थे, मतलब इकट्ठे दैट वे, और बेटी भी है उनकी और वो सब. दैट इज हाउ इट अनफोल्ड्स, है ना. इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कभी हाउ में जाओ मत. यू नेवर नो हाउ थिंग्स अनफोल्ड, एंड दैट इज हाउ वी हैव टू बी. हाँ जी, पढ़िए. Mastin Kip. I never thought my life would look like it does now. I knew it would feel this way, but I never knew it would be this way. The path to your dreams is like being in a labyrinth. All you can see is the next few feet ahead of you. You can't see what's around the next turn until you go around it, and then you see the next few feet after that. Sometimes there are dead ends, and you have to turn back, and sometimes there are shortcuts that you stumble upon as if by magic, and which accelerate your passage. The path to your dreams unfolds in exactly the same way. कौन फ्रीज हो गया? मैं हो गई कि मैम हो गए? नहीं, कोई तो हुआ है. Ma'am has frozen down. मैम हुई है, मैम हुई है. So बुक बंद हो गया. Ma'am, you are on mute. Yeah, my network had conked off. I think it was my Wi-Fi. So it doesn't matter. I'll bring that on the screen. मैं लगातार आप लोगों से पूछ रही थी कि can you hear me? Again, ma'am is on freeze. yeah, Ma'am's again. net, sorry. Ma'am, we can't hear you. Her network has freeze, Poonam ji. Yeah, she's back. Yes, ma'am. Now, Yeah, connected through my phone now. One sec, I'm connected through my phone, but I'll have to screen share again. Yeah, so Poonam, you can maybe start reading again from the path to your dreams. The path to your dreams is like being in a labyrinth. All you can see is the next few feet ahead of you. You can't see what's around the next turn until you go around it, and then you see the next few feet after that. Sometimes there are dead ends and you have to turn back, and sometimes there are shortcuts that you stumble upon as if by magic, and which accelerate your passage. The path to your dreams
unfolds in exactly the same way. Yeah, so here it says again the same thing कि जिंदगी मतलब pathways labyrinth की तरह होते हैं, मतलब जैसे भूल पता नहीं होता ना, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे रास्ते। तो हमारा जो ह्यूमन विजन होता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था एक बार, कि वो कार की हेडलाइट्स की तरह होता है। सो जब आप कार में बैठे हुए होते हो तो आपकी हेडलाइट ज्यादा से ज्यादा आपको 20 मीटर्स आगे दिखा पाती है ना, उतनी लाइट है, उतना ही ह्यूमन विजन होता है। लेकिन यूनिवर्स को तो आपका डेस्टिनेशन मालूम है ना, उनको ये भी पता है कि ये वाली रोड पे डेड एंड है, ये वाली रोड पे बहुत गड्ढे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और ये वाली जो रोड है इससे आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा और आगे की जर्नी बहुत स्मूथ होगी। डजंट मैटर अगर 10 मीटर आपको गड्ढों से भी अपनी गाड़ी चलानी पड़े, ठीक है, लेकिन आगे बहुत स्मूथ रहेगा और आपकी मंजिल भी वहीं पर है। वहीं पर है वो 10 लाख रुपए जो हर महीने आपको कमा रहे हैं, वहीं पर वो वाला परफेक्ट बॉडी वेट है जो आपको वैसा अचीव करना है, वहीं पे आपकी परफेक्ट हेल्थ है। तो यूनिवर्स हमको उस रास्ते पे, जो पहला और दूसरे रास्ते पे, हालांकि अकॉर्डिंग टू द कार हेडलाइट हमको ये दोनों रास्ते बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बहुत स्मूथ पाथवे है। तो एक ह्यूमन माइंड इन दोनों सड़कों पे चलना चाहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड पे, क्योंकि थर्ड पे आपको गड्ढे नजर आ रहे हैं थोड़े से, लेकिन वो सिर्फ 10 मीटर के गड्ढे हैं, उसके बाद मंजिल है आपकी उसी रास्ते में, ठीक है। तो अगर हम सरेंडर करते हैं, सो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड को यूनिवर्स, अगर आप इस जर्नी में होते हो जहां पे यू हैव अ फायर इन योर बेली दैट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अचीव अ ब्यूटीफुल लाइफ, आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, लव एंड ग्रैटिट्यूड आपका बेस है जिंदगी का, तो आपको यूनिवर्स फर्स्ट एंड सेकंड पाथवे में चलने ही नहीं देगा, आप थर्ड पर ही जाओगे। चाहे वो गड्ढे नजर आ रहे हैं, आप गड्ढे में थोड़ा सा गिरोगे लेकिन वापस निकल जाओगे, क्योंकि उस रास्ते पे आपकी मंजिल है, आपका गोल है। सो दैट इज हाउ इट सेज हियर that sometimes you have to turn back, sometimes you will have to drive on that gadha wala pathway, but then so be it, doesn't matter, okay, because the road to success, victory and infinite possibilities is the third rasta. So उस वक्त आपको लगेगा क्या है, मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, सब मेरे ही साथ होता है, ये भी गड़बड़ चल रहा है, हेल्थ भी गड़बड़ चल रही है, पैसे भी नहीं है। सो दोज आर योर गड्ढास, ओके, बट उसके बाद आपका पाथवे बहुत स्मूथ, बहुत ब्यूटीफुल, और आप मंजिल तक बहुत आराम से पहुंचोगे। सो दैट इज व्हाट दे आर ऑल सेइंग, दैट कभी भी परेशानियों से, गड्ढों से लाइफ में अगर होते हैं ऐसे, इनसे घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। सो लाइन पिछली पढ़ लो, उसके बाद we'll just wrap up these lines. Line Beachley. No one can see the whole way. You have just got to be willing to put your first foot forward and go on that journey. Yeah, simple. So just know the goal, उसके बाद एक एक कदम करते जाओ। इतना कुछ सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की इतनी जरूरत नहीं होती है ना। दैट मीन्स एक भरोसा, सरेंडर विथ फेथ, surrender with faith. The universe knows the best. Your inner being knows exactly where to take you, how to take you. Okay? So we don't have to put our head into it at all. So this is what it is. But be focused on your manzil, that this is where I want to reach. Okay, this is the kind of health I want. This is the kind of the career success that I want. This is the kind of money I want to receive every month to give me, my family, friends, everyone the best life. And if you have any social cause, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो गोल है आपका। अब कैसे, क्या, वो सब, उन सब चीजों में मत पड़ो, अपने आप वो रास्ता। So they're just explaining basically that, don't get into how, and the rasta will not always be an even one. It will not be an 8-lane highway. Everybody's worked on themselves to reach where they are. So they are not trying to fix the outside things, fix yourself. Okay, so we have to fix ourselves. Somebody's behavior is bad with us, please fix yourself. The moment you have fixed yourself, आपने अपना perspective, आपने 100 बार लिख लिया अपना, thank you for my amazing relationship with so and so, thank you for my amazing relationship with so and so, thank you for my this, ये आपने 100 बार लिख लिया, आप अपने आप को फिक्स कर रहे हो, ठीक है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले के बिहेवियर की, क्योंकि आपकी एनर्जी के हिसाब से इतना ग्रैटिट्यूड आपने सैचुरेट किया है, ठीक है। तो अगला या तो आपके एनवायरनमेंट से गायब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो क्लोज रिश्ता है तो वो गायब नहीं हो सकता। तो आप देखोगे उसका बिहेवियर, उसका कंपैशन, उसकी जो अच्छी वाली एनर्जी है, वो आप पुल आउट कर लोगे उसकी जिंदगी से, जो अभी तक डोरमेंट थी, इट वॉज लेटेंट,
इट वॉज डॉर्मेंट, ठीक है, लेकिन वो गुडनेस तो सब में होती है, इनर बीइंग तो सबका ही बहुत अच्छा होता है ना, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ यूनिवर्स. सो दैट इनर बीइंग वाली जो एनर्जी है, आप उसकी बाहर पुल करके लेके आ पाओगे जब हम अपने आप को फिक्स करते हैं, जब हमारी एनर्जी चेंज होती है. So that is how it is. And they have written, of course, these people had very big goals because इन सबके नाम ही ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं अपने अपने फील्ड में जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. बट सब ये सारी चीजें समझा रहे हैं कि इन सब ने अपने आप पे काम किया था, इन सब ने बाहर बाहर की चीजों पे नहीं काम किया था. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू कीप राइटिंग ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स. मुझे बहुत अच्छा लगा आज बिट्टी जी, सरिता जी इतना सारा लिख रहे हैं, मतलब इतने अच्छे से. तो सोचो कितनी एनर्जी बॉडी के सेल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. So, and the universe will say, okay, whatever you're writing, have more of that. So when you're writing gratitude, अब आपकी जिंदगी उन चीजों से भर जाएगी जिसमें आपको लगेगा, oh wow, thank you so much, ये कैसे हो गया. So, but it will happen, no? This is the law of attraction, and this is what works, whether we believe it or whether we don't believe it. Whether you believe gravity is working or not, it is working. Okay, whether you believe that electricity काम करती है, you believe it or not, लाइटें जल रही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो काम कर ही रही है. सो बिलीव नहीं बिलीव करने से कुछ नहीं होता, ये तो लॉ है, ये तो वर्क करेगी. कोई भी चीज अगर आप एप्पल ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आके गिरेगा, चाहे बोलो आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ ग्रेविटी, बट इट विल हैपन दैट वे. एनर्जी वर्क्स. आइंस्टीन की थ्योरी ही ये थी ना, उन्होंने सारी एनर्जी और पावर और कॉस्मिक एनर्जीज इन सब पे कितनी रिसर्चेस की थी, वो सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे. फिर न्यूटन ने जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इट वर्क्स लाइक दैट, देयर इज नो अदर वे. व्हाटएवर सीड्स यू आर सोइंग, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रीप दैट हार्वेस्ट ओनली. एप्पल का बीज बोगे तो एप्पल ही निकलेंगे, और 500 निकलेंगे. एक छोटा सा बीज बोया था, 500 एप्पल निकलेंगे. ऐश करो फिर जिंदगी में, है ना, बिकॉज यू ओनली सोड द सीड, नो, ऑफ दैट एप्पल. मजे करो अब, अच्छी बात है. सो इसीलिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जी आप सो करो, आप लव की एनर्जी सो करो, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी सो करो, आप ब्लेसिंग की एनर्जी स्लो करो. सो ये करते जाओ एंड यू विल सी हाउ ब्यूटिफुल लाइफ अनफोल्ड्स. So life is very easy and effortless. Don't complicate it, okay? And talk to the universe more. When you have your parents, guardians, doctors, everybody as the universe, you don't need to worry, no? है ना? आपके पेरेंट्स भी वही हैं. अगर आपके डैड नहीं है जिंदगी में तो आपके डैड है ना यूनिवर्स. आपके पास मॉम नहीं है, मॉम है ना universal forces. They are always leading us, guiding us, assisting us, helping us, always showing us the path, always taking us towards the huge successful, goal. All that's happening all the time. So you are never alone. कभी भी ये word मत use करना, I'm lonely. ओके, ये बहुत बिलो द लाइन. अगर आप फीलिंग चार्ट में देखो तो आपको वहां लोनलीनेस नीचे नजर आएगा, राइट डाउन देयर, ठीक है. उसके थोड़ी देर के बाद एक काला कलर का गड्ढा बना हुआ होता है फीलिंग चार्ट में. फीलिंग चार्ट तो हमने बहुत बार पोस्ट किया है ग्रुप पे. सो इसलिए डोंट गेट इनटू दोस जोन्स व्हिच आर एनीथिंग बिलो द लाइन. Okay, there is a power. You are surrounded by 1,000 angels wherever we go. When you're sleeping, those 1,000 angels are guarding you. You're guarded by them. You're protected by them. Okay, you're assisted by them. When you're sitting at work or whatever it is, there are 1,000 angels surrounding you. Okay, they will take you to that place. But for that, for their protection, for their support, you have to be in a high feeling frequency. कभी कभी आर्टिफिशियली मैकेनिकली हमको ये करना पड़ेगा, है ना. दिल में थोड़ा दुख है, लेकिन हम फिर भी थैंक यू बोले जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, होपोनोपोनो कर रहे हैं, 369 कर रहे हैं, सिर्फ थैंक यू ही बोल रहे हैं, मन में थैंक यू चल रहा है, हम ब्लेस कर रहे हैं. तो ये टेक्निक्स यूज करके हम उस फीलिंग फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाएंगे. बिकॉज इस मोमेंट जो आप सोच रहे हो ना, वो आपका नेक्स्ट मोमेंट क्रिएट कर रहा है. सो इस मोमेंट आप थैंक यू बोल रहे हो, यूनिवर्स विल गिव यू मोर थिंग्स दैट यू विल बी थैंकफुल फॉर. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, है ना. सो बाकी का, एंड थैंक यू सो मच पूनम, एंड आई विश वी कुड गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर रीडिंग वेरी ब्यूटिफुली. Thank you so much, ma'am. See, now you realize you have all the luck of the universe. Yes, ma'am. Thank you. Okay. दीप्ति सी, जी, मैं पिन करती हूँ आपको. Oh yeah, feeling chart. Oh God, you got it. मतलब आपने उसमें डाल लिया है उसको.
Your voice, I think you've gone on mute. जून ये में हम गए थे लोनावला, वहां पर अरविंद सर ने सबको दिया था। Ah, very nice. Sarita aunty are still on mute. हाँ. मैं नहीं कर रही हूँ। Even I had that. नहीं, ये तो Very मैं बहुत nice. सारे बनवा के आई एम गिफ्टिंग, सबको देती अच्छा. हूँ मैं, ये जो हाँ. समझते हैं इस चीज को। हाँ, और जब आप बनवाते हैं ना, तो जो लाइन के नीचे वाला उस पे ना ऐसे आप क्रॉस डाल दिया कीजिए कि इस जोन में नहीं रहना है, ये क्रॉस है। ओके Just cross it ओके, up या with a नेक्स्ट black टाइम, अभी sketch तो pen. 30 बन चुका है ये, नेक्स्ट टाइम आई डू दैट। अच्छा, हाँ. So this is ओके the feeling chart. We will post it again on the group. I have also got. I'm not laminated or anything, but मेरे नहीं, इट्स bedside वेरी drawers में स्मॉल है. दीप्ति, इट इज सो स्मॉल, वेरी क्यूट, यू हाँ, कैन कीप इट हाँ. इन योर पॉकेट, वॉलेट, एवरीवेयर। Okay, awesome. हाँ, because ऐसे पकड़ना मतलब small है ना. वेरी इन स्मॉल, दो वेरी स्मॉल। fingers के बीच में बहुत कम space I होता है. loved it. हाँ, कितने एंड वेरी क्यूट है क्यूट, ना? वेरी क्यूट। ये मुझे Very मन है कि मैं nice. आपको कैसे भिजवाऊं मैं सबको। हाँ, you can start इसका business. We ओह will वाओ, pay for it and we'll buy it from you. Good सो morning, ma'am. स्वीट, थैंक यू। Yeah. Good morning, Beautiful. ma'am. Thank you. Good Ma'am, very morning. Good morning, So, ma'am. good morning. So there's Ma'am, only today. Soumya's hand raised. Wait, then I'll just go to the gallery view so that I can see who's. So Puneet Chadwal, want to speak to us or you want to talk to yourself? Hanji. So I can see Deepa and Soumya. So yes, Soumya. Lalita And you? ji wants to speak, I guess. Yes, ma'am. Ma'am, today is my Yeah. birthday. Please wish me. Oh. Yes, ma'am. Yeah, wish you a very, very happy birthday and a great Thank you. year. And may you get everything that you've desired, whatever it is that you want in your life. Thank you so much, ma'am. Thank you so This much. Your 2024. wishes are a good gift for me, ma'am. Oh, Thank no, you no. so much, ma'am. All of us are wishing you. So on behalf of everyone, I'm wishing you a very, very happy birthday and the best year Thank you. ever. खूब enjoy करो, खूब successful हो, जो काम कर रहे हो. Be successful in all the areas of your life. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you all. Enjoy your day. Thank you. Yes, Soumya. Hi. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. So, as promised, here's my account for the whole 12 days of tripping that I've done. So, what all I've done and how it has manifested. So, I'll just give a brief out. So, 2 trips were planned. One was to Tirupati with my parents, and the other one was to Goa with my friends. So both beautifully executed. So in November, full moon, I had done the scripting for the December month, which was inclusive of both the trips. Okay, that was the first practice that I did for this. मैंने पूरा already लिख लिया था universe के साथ कि what all will happen with me in that. तो तिरुपति का trip में the whole intention for going to Tirupati was to eat the laddu. It was as simple as that. So there is a process. So we go by steps. We take the steps to go to the temple. So 2080 steps का एक है और दूसरा बहुत बड़ा है. We took the 2001, and throughout the process, I was like, I did the gratitude walk on the steps. So thank you, along with sharing my mom and dad to climb up. So last stretch में it is 500 steps in a stretch continuous. I told my mom and dad, you guys come, I'll go. I want to complete this in one stretch. So 500, thank you. I just did that and I reached at the top and I was waiting there for my parents to come. And one of the great magical moments happened with me. I was standing there and I was like sending them energy because they were trying to come up. I was like, thank you for their health and I'm doing this. Suddenly out of nowhere, a person comes and it is the steps where we are going towards the temple. Nobody has not yet gone to a temple there. So this is towards the temple. So
there comes a guy and he opens his bag and he hands over me a prasad, the laddu. So no sooner I climbed my steps and I'm standing, I got a prasad, and that person just gave the prasad to me. He did not give to anyone else. There were so many people around me and everybody had come up climbing the stairs, but no, he did not give to anyone, just give to me. And he sat and he ate. I was waiting. I waited for one whole minute to see if he'll give to someone, but he did not give it to someone. And that was such a touching moment for me that भगवान खुद आके है ना ले भाई तू इसीलिए आई थी ना ले ले अभी लड्डू खाने ही गई थी ना, सारी एनर्जी तो उसी में थी तुम्हारी, तो वो तो मिलना ही था ना. It was so amazing. I felt कि हो गया अभी वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं because he came himself and he gave. Then again when we did the darshan, it was easy and effortless. बहुत सारे miracle moments वहां पे भी हुए where I no sooner I asked something, it was delivered to me. And then not just one time, I got the opportunity to have laddus 2-3 times, which is like very rare in Tirupati scenario, right? So wo ho gaya. One of the key learnings for me in this trip was so my mom and dad are very practical and logical people. So when I say this, you guys understand ki how their behavior is, and I have come towards this creative lifestyle. So whenever my dad used to go and stand in the line, it would take him hours. Like it would be a mess. It would not be a joyful to him. But whenever I stood in the line, it happened like magic. So even in the laddu line, we were standing. We were told कि एक ticket पे एक ही laddu मिलता है. I was like, ठीक है, it's okay. I was like, हाँ, thank you. I was showering thank yous for the people who are working and everything. जब हमारा turn आया and I gave the thing, for one ticket we got 2 laddus. Like it was like that. Like my mom is in shock, my dad is in shock. I was like, yeah, it happens. Then we were waiting in the queue for lodge. So they said it will take 2 to 3 hours to get a room. My dad was like, come, let's go. We'll search outside. He made me roam whole of the vicinity to find. But I knew our room will be there only. I said, okay, ठीक है, चलो आपको देखना है आप कर लो, ठीक है. I just supported him. And then we came. My mom was in the line. I said, I will sit. You guys go take a tea break. And out of nowhere, that guy comes and he's like, do you want a room? AC, we have AC room. I said, it's fine. Okay, take this form. I filled the form and my dad, dad had to give. So dad went there. They did not. So the line was for non-AC room. And I said, I want AC room. But when we went and gave the form, they gave us a non-AC room. And there are people waiting from like 3-4 hours. We literally bypassed them just because universe worked like that. He bought the AC room in front so that I would take it up, but he gave non-AC room because मेरे दिमाग में तो non-AC room था. So it was that moment is what I realized कि how being in a creative mood makes life easy. Like I could literally see कि survival mode में क्या हो रहा है और मेरे creation mode में क्या हो रहा है. So it was such a. Next is the Goa trip. तो वो तो literally मैम I had shared you guys कि मैम की manifestation है मेरे life में वो मस्त वाला gift. But ऐसे हो गया था कि तिरुपति के आने के बाद I took ill. और ऐसे लग रहा था कि I can't make it at all. But कहीं पे था कि on 21st evening I will be very fine. Okay, I'll be fine to go. 19, 20, 21, I was in Hubli. So 21st 5:30 ko, I'm still not feeling great. Like I called my friends and was like, guys, you go ahead. I don't think I can make it. Not feeling up and my health is my priority at any given moment of time. So you guys go. Then out of nowhere a suggestion comes ki have a piece of ginger, keep it in your mouth and slowly bite it and let the juice go through. I did it at 6 o'clock. I had a piece, and at 6:15, at 6:20, I'm feeling
great. Like out of nowhere, an energy, full energy is in my body, and I'm feeling so fantastic, so great. पहले 3 दिन I'm like a zombie, ऐसे ऐसे घूम रही हूँ, और 6:15 से I'm like चलो 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 पैक करो वो करो. So that itself was a, because I had done 555. 5 days. I still did it even when I was feeling कि I will not make it. I was like मेरे को ये करना ही है because I have started doing it. I kept doing it, and that was a miracle. So I went on this trip itself is a miracle for me. वहां पे गए, the view, everything was fantastic. Again, there was a lot of learning curves for me here कि जब आप survival mode पे होते हो, because all my friends are in survival mode, इतना effect हो जाता है. Like I was in one particular time बहुत ज्यादा dip हो गई थी, बहुत ज्यादा, because the forces, energy fields interact with us, right? So I was very low because I'm only the positive person. Everybody is very practical in the group. So I was like, अरे यार, what I did was I just went back to one of your sessions on YouTube, ma'am. I just put it and I just slept. You were speaking in my head, and then after that, when we were going somewhere, I removed it, and that was the night time in Goa. We went on Don Polo, one of the pubs, the Big Mouth. Oh my God, that experience was so amazing that the whole street is lighted up, and there is the Mickey's, and then there is the Big Mouth, and we went to Big Mouth, and there is this amazing, beautiful singer who is singing amazing songs in that remix kind of way. I have a clear must seats, best food. It was so amazing. It changed. Before that, it was like, भाई अभी मेरे को हुबली छोड़ दो, I don't want to be here anymore. To enjoying a fully fledged night, it was amazing. So, very stark difference in being in creative mode and being in survival mode. That was a big learning for me. So thank you so much. Yeah, great, awesome. And good that in the worst of the times you are thinking of all the nice and positive things, and you can still create. Even out of in that situation, you still created. So that's amazing. Yeah, there was no other option. I felt ki I don't want to feel like this. I did not plan this like this. So my only tools are these now. These are the tools that I want to try. Yeah, So. baki zarurat hi nahi hai na. You don't need anything else. So what is that affirmation that you had written 55 times? If it's Same, not too personal, if you want to share. No, ma'am. Whatever you had said. Thank you for the most amazing and fun-filled trip to Goa from 22 to 24 December 23. Yeah. आगे ऐड कर दिया करो full of magics and miracles. This is what I have Yeah, written also. वो miss गई. But it was. Yeah, So great, just did awesome. scripting for Tirupati and 555 for Goa, and that worked for me. Great, awesome. And wish you many more amazing travels. One more if I can add. तो एक और intention है कि I want to take classes no matter what, no matter where, and I want to do the notes. And universe has been such miraculously orchestrating my time that 6 to 7:30 is literally, मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे मेरे पास नेटवर्क होता है, मेरा बैटरी लो होके भी मेरे फोन, मेरे सब कुछ चलते हैं. I get to attend it, I get to take the notes. So that magic happens every day to me, every day. Yeah. Great, awesome. Congratulations and way to go. You are that one person who will transform this world, and wish you huge success in everything that you do. Thank you so much. So yes, Deepa. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good So, morning. मैम हाँ आज जी। मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो निर्मला है, अभी तो वो लेफ्ट होके चली गई, तो फिर उसके लिए मुझे हेल्प के लिए ब्लेसिंग चाहिए थी, और मुझे ऐसा लगा कि वो बोलती नहीं तो वो सुने कि नहीं मुझे भी ब्लेसिंग मिल रहा है. वो एक्चुअली ग्रुप में आती नहीं है पर सुनती रहती है कि नहीं नहीं होता है, तो फिर मैं सो सिखाई निर्मला उसको. आंटी, आपके लिए बहुत सारा गॉड ब्लेस यू विद द बेस्टेस्ट ऑफ द हेल्थ दैट यू एंजॉय, और बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी, एक्सीलेंट इम्यूनिटी, खूब खुशियां, फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ सारी बहुत अच्छी रहेगी इस साल एंड ऑनवर्ड्स. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. और मैम मेरी बेश तो शेयरिंग थी कि
मैंने ये दिसंबर के पहले सोचा था कि मेरा अकाउंट का बैलेंस इतना होना चाहिए। मेरा अफर्मेशन है कि मनी इज रेनिंग ऑन मी, आई एम मनी मैग्नेट। तो फिर मैं उससे भी डबल बढ़ गई है, पता नहीं हाउ में तो मैं गई नहीं है। और हाँ फिर सेकंड मैम, मेरी ये 3 मंथ में तीसरी एग्जाम है, 2 इंटरनल और अभी वो फाइनल 2 जैन से। तो फिर आज ही मैम मुझे लग रहा था कि डॉटर की बोर्ड की एग्जाम, मेरी एग्जाम, तो आपसे क्लू मिल गया है कि भी रास्ते तो आगे आपको पता नहीं है मंजिल क्या है, बस चले जाओ चले जाओ। तो आज तो ऐसा ही होता था कि कितना मंजिल पे पढ़ना है, फोकस। नहीं करना है, कि फिर 4 मंथ में तीसरी एग्जाम नहीं दी जा रही है। तो फिर मैम आज आज आपने मैजिक क्लू दे दिया। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, कोई थैंक यू चिंता मैम। की बात नहीं है। एंड विश यू मोर प्रोस्पेरिटी। इनकम आपकी क्या बोल रहे हैं, डबल हो गई है हाँ पिछले नहीं, कुछ दिन? आपने बोला था ना कि आप अपने अकाउंट के बैलेंस में आप सोच के रखो कि इतना कम नहीं होना चाहिए, मुझे इतना अप जाना हम्म, चाहिए। तो फिर वहां पे मैंने 1 लाख सोचा था, तो मेरे 2 लाख अप हो, इतना भी अच्छा, वो तो पता नहीं मैं हाउ में। तो फिर वाह। मैं अभी लिखने का टाइम नहीं है। मैं अफर्मेशन बोलती रहती हूँ मेरे बच्चों को सब। मैंने बोला लिखने का टाइम नहीं है, चलो पर बोलते रहो जो भी है। मैं आई एम, तो फिर हाई फ्रिक्वेंसी इज माय हैबिट, विक्ट्री इज माय हाँ, हैबिट, हैप्पीनेस इज माय हैबिट। तो फिर मैंने या बोला टाइम नहीं है तो शॉर्ट बोलो पर बोलते रहो। थैंक यू मैम। या थैंक यू सो मच एंड विश यू लॉट हाँ प्रोस्पेरिटी। अभी तो मैंने पूरी, शुरुआत है ना दीपा, अभी बहुत कुछ आने वाला है। थैंक यू मैम। अभी 2-3 दिन से मैंने पता नहीं क्या हुआ, ये हंचीज आया। सुबह उठती हूँ, मैजिक स्टोन मेरा वो पिलो के नीचे होता है, मैं एक बॉल में वाटर लेती हूँ पूरे दिन। ये क्या घर हमारे हाउस के लिए लिखने का कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता। तो फिर एक बॉल में पानी लिया और मैजिक स्टोन से इतना ऐसे छिड़का, वो मैम करते हैं ना ऐसे, और पूरे घर में वो इलेक्ट्रॉनिक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हेल्थ वेल्थ सक्सेस अचीवमेंट विक्ट्री, पता नहीं कहाँ से हंचीस आया। मैम तो सुबह उठ के 2 मिनट ऐसा कर लो और फिर वो पानी सबको पिला देती हूँ। मैंने बोला प्रसाद है, पी लो। या ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। हाँ, पानी एक्चुअली मेमोरी कंटेन करता है। देखो मैंने आपने आपको दिखाया था ना मेरा, हाँ दिस इज माय बॉटल, उस पे हमेशा कुछ कुछ 3 days आई कीप दिस। सो माय मेंटर्स हैव टॉट मी that suppose if I'm writing that thank you for the best of health, so I keep this water for 3 days, इस पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। so मैं तो ऑफिस चली जाती हूँ, फिर मैं सुबह ये पानी पीती हूँ और ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे जब यहाँ तक हो जाएगा then I'll again refill it, बिकॉज बाकी के पूरे पानी में उसकी प्रॉपर्टीज चली जाएंगी। एंड इट रियली डजेंट मैटर आपकी ब्रॉन्ज की बॉटल है कि आपकी स्टील की बॉटल है कि आपको आपका वो है जिसमें थर्मस टाइप, अगर वो वाली बॉटल है, लाल रंग की है, प्लास्टिक की है, पिंक कलर की है, इट रियली डजेंट मैटर। ओके, इट्स अबाउट द एनर्जी दैट वाटर विल एब्जॉर्ब इन एनी केस। सो you can continue doing your water technique and water bottle technique or whatever it is, anything, because water does absorb a lot of energy. देखो भारती जी का बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, पानी छिड़क के अपने सारे बेडशीट और उनपे। सरोज जी का बिजनेस है ना, पूरा पानी छिड़क के कहाँ से कहाँ चला गया। जब वो कभी भी कोई सेल करती है किसी को कोई अपहोल्स्ट्री, तो उस पर भी छिड़क के देती है कि ये जिस घर में जा रहा है वहां पे खूब खुशियां और बरकत आएगी, दैट वे। So yeah, that is what. So whatever you think, that becomes simple. So या thank you so much, Deepa. थैंक यू मैम। Thank you, and God bless you. थैंक All यू right. मैम। Oh, we have Ekta Kashyap. Ekta, you want to share something? Ekta, you'll have to unmute and talk. Chalo, never mind, then we'll just meet tomorrow. And thank you to everyone on the YouTube as well. And thank you to each of you. Enjoy the year closing, year end, for such a beautiful year that we've all been together. And thank you, and have a day full of fun, love, and laughter, and lots of gratitude. Thank Thank you you, so ma'am. much. Thank you. Thank Thank you you, so ma'am. much. Thank you. Thank you for your blessings every Thank day. you, so ma'am. much.